हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी डाइपोल ऑन दी एक्सियल लाइन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी डाइपोल ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। सेम स्टेप है बेटे, जैसे हमने एक्सियल भी किए थे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज हमने डिस्कस किया है, वो कितना होता है 1/4πε0 q अपॉन r। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्टली, ओके, फॉर द पॉइंट चार्ज के लिए। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो अगेन टेक ए डाइपोल minus q plus q, center point, total distance to a, this is a, this is a, and this is the equatorial line. And let P is the point where we have to find the electric potential, and this point is from O at a distance r. Now again, electric potential due to minus q at point P, VA 1/4πε0 minus q upon this distance AP. Similarly, potential due to B point 1/4πε0 q upon BP. This is the BP. Potential is a scalar quantity, so इसमें डायरेक्शन काउंट नहीं करेंगे। So AP and BP 1 and 2. Now take the triangle AOP. Let us suppose, not suppose this angle is 90. Then taking a right angle triangle, जो right angle triangle है AOP। right angle triangle में जो हमारे पास ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AP is equal to R square plus A square. Similarly, here is same BP R and A, and ये भी कितनी बनेगी R square plus A square. It means AP is equal to AP. Put this value in equation here and here to get potential due to charge this one 1/4πε0 minus q upon AP. It is R square plus A square plus VB 1/4πε0 q upon VB. VB is R square plus A square. Then VA is equal to, ये सभी वैल्यू सेम है, 1/4πε q upon R square, 1/4πε q upon this one, a minus a plus cancel, then potential, sorry, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये VA then VB is equal to 1/4πε0 q r plus a square. Then the net potential VA plus VB, that is equal to minus 1/4πε0 q upon R square plus A square, q upon R square plus A square का square. ये plus ये minus cancel out, then net potential is 0. That means electric potential due to dipole on the equatorial line is 0. यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता है आपका, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपने ये वैल्यू याद रखनी है और उसके बाद प्रेडिक्शन जो है वो फाइंड करनी है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।